Hello everyone, my name is Kanika Dabral. I am a third year BTech student at NIT Uttarakhand, and in this video I would like to share my summer internship experience. I would try to cover everything and I have prepared a list of questions so that मैं कुछ छोड़ूँ ना और कुछ भूलूँ ना. So starting with the first question, where I interned. So I interned in a startup named Skyline Analytics, and it is a newly built company. And the second question, how did I happen to intern here? तो ये कंपनी हमारे कॉलेज में आई थी एंड इट वाज ओपन टू थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर स्टूडेंट्स एंड आई हैपन टू अप्लाई हियर एंड so I got the opportunity. So what actually helped me to get this internship, there are basically some things, and the first and foremost one is कि जो प्रोजेक्ट मेरा रिज्यूमे में मेंशन था, द प्रोजेक्ट दैट आई मेड, इट हैपन टू अलाइन विद व्हाट द कंपनी वांटेड. तो द फर्स्ट एंड foremost learning from here is always modify and update your resume according to the company's demands. It will always be a game changer and it will always give some benefits to you. Now the third question, was it paid or unpaid? So it was a paid internship and the stipend was also good. Now how was the interview and the selection process? So first of all, the first round was resume selection, the second round was a telephonic call, the third was the actual interview. And interview में मुझसे basic DSC की कुछ terms पूछी थी, and then I was asked some business questions, some logical questions, and one puzzle, and it was all, and that was it. Now we will start with my journey. Basically मेरा initial thought था that I would not want to do it. मैं 2 महीने बैठ के DSA करूँगी, I'll prepare for other companies, but somehow I happened to do it. और इसमें major role मेरी बहन का है. She was the one who told me that doing something always makes you learn, and I'm very happy that I did it क्योंकि it taught me so many things. I think बस DSA करना would have not helped me grow this much. Basically I could not focus on DSA this much in these 2 months, but this internship, it will never be my regret. I'm happy doing it and I'm very happy that I did it. Now we will go to other questions. Now how did it start? So it started with a welcome brunch with my manager and my colleague who happens to be from the same college as I am, and my manager's wife. So it was more of a informal brunch, but we got to know so much about each other that day. I will also include some clips from the first day. I think I have some. And वो first day था जब मैं welcome brunch पे जा रही थी, and I felt, oh my god, I am entering into the corporate world. And that feeling was different and it was special. What was the project about? So we basically did forecasting and we basically worked on Excel and VBA. So our client was actually a very big firm in India. I don't want to disclose it. I think there is a NDA that I cannot disclose the clients. So, but the work culture and everything was pretty hectic. So it was not a 9 to 5 job. हमें रात को 8:30 बजे भी कॉल पे होना होता था, 6:30 बजे भी कॉल होती थी, because the clients were not from India, they were from USA. तो तुम्हें उनके टाइम जोन के अकॉर्डिंग अडेप्ट करना पड़ता है. But okay, this is also something I learned about corporate, that you cannot expect कि 9 to 5 काम होगा, that तुम अपना 5 बजे लैपटॉप बंद कर दो and it is done. There would be days when you will have to work till 9 till 10. There would be days जब तुम्हारा 2-3 बजे ही काम खत्म हो जाएगा, but you have to adapt. Or don't want this kind of lifestyle, you have to choose early. Try to go into the government field. Try to do something else, because corporate, it is not fixed and you have to be flexible. Now how my typical day looked like. So usually मेरी पहली मीटिंग 11:45 पे शुरू होती थी, and that was the time जब मुझे टास्क असाइन होता था. And throughout the day I had to be in touch with my manager and one more person, and I had to update them about the task. And एक टास्क होने के बाद I used to get another one. That is how a normal day looked like. फिर 6:30 पे एक मीटिंग होती थी with the clients, and according to their requests and demands अगले दिन का टास्क and सब कुछ डिसाइड होता था. तो बेसिकली दिस वॉज अ यूजुअल डे. बट बीच में 2 हफ्ते ऐसे थे कि 8:30 बजे इन द मॉर्निंग कॉल हो जाती थी एंड द वर्क यूज टू गो अप टिल 10:30. सो इट वॉज वेरी हेक्टिक दैट टाइम. बट लेटर आई लर्न कि वो जो प्रोजेक्ट था वो 2 महीने का प्रोजेक्ट था, एंड बेसिकली बिकॉज समवन हैड टू लीव बिकॉज ऑफ एन इमरजेंसी, इसलिए वो 2 महीने का प्रोजेक्ट था, वो हमें 2 हफ्ते में करना पड़ा. दैट्स वाई इट वॉज वेरी हेक्टिक. सो इट्स ओके, इट हैपन्स. दैट इज़ वॉट आई एम सेइंग, इट हैपन्स. कॉर्पोरेट में चीज़ें फ्लेक्सिबल होंगी एंड यू विल हैव टू बी फ्लेक्सिबल. You will have to work. You cannot say कि I want to take a leave, I don't want to do it, I can't do it, because you are responsible for some tasks. तुम ऐसे बीच में छोड़ के नहीं जा सकते हो, and it is your task. You are appointed for it. तुम्हें करना पड़ेगा. Now how is life as a remote intern? Basically सुनने में ऐसा लगता है that it is pretty chill. You have to sit at home, but it is not. Very firstly, the work hours are not fixed. You have to work anytime. Maybe I'm not sure, मैंने भी ज़्यादा corporate life देखी नहीं है, but I assume कि शायद अगर तुम offline जाते हो, you work from office, तो maybe तुम्हारे work hours defined होंगे. Maybe you can close your laptop at 5 and get back home, but I'm not sure. But life as a remote intern is
नॉट फिक्स्ड, तुम्हें 10 बजे भी कॉल आ सकते हैं एंड यू विल हैव टू अटेंड इट। ऐसा मेरे साथ मैक्सिमम टाइम नहीं हुआ, बट एज आई जस्ट सेट कि बीच के 2-3 हफ्ते थे ऐसे जब हमें करना पड़ा था। नाउ बट देर आर पर्क्स ऑल्सो। तुम्हें एवरीडे एक जगह पे नहीं जाना, तुम्हारा ट्रैवलिंग का टाइम बचेगा, तुम्हारा ट्रैवलिंग का खर्चा बचेगा। सो दे आर द पर्क्स एंड मे बी बीच के 1-2 आवर्स में यू कैन डू योर पर्सनल वर्क। अगर तुम्हें अर्जेंटली कहीं बाहर जाना है तो तुम वो 1-2 घंटे के लिए जा सकते हो, कीपिंग इन माइंड दैट योर टास्क आर डन। नाउ व्हाट ऑल आई लर्न फ्रॉम दिस इंटर्नशिप। सो इनिशियली मैं सिर्फ अपने मैनेजर के साथ टच में होती थी। ही यूज्ड टू टेल मी दैट आई यूज्ड टू गेट टू डू इट। तो पहले 1 हफ्ते के अराउंड मेरा इंटरेक्शन बहुत कम था, बट व्हेन आई स्टार्टेड गेटिंग इनटू द मीटिंग्स एंड मैं प्योर ऑब्जर्वर और लिसनर होती थी मीटिंग्स में, मेरा इनपुट बहुत कम होता था, बट आई लर्न सो मेनी थिंग्स। सो there was this guy and he was at a very good post and I think he had some 8 to 10 years of experience. But what I learned from him was that you have to actually be very good with your words and you have to be very clear and you have to be crystal clear with what you want to communicate. मतलब his words used to be absolutely clear. He used to communicate so well कि दूसरे को समझ आएगा ही. The second thing that I learned was don't be shy to ask something. अगर तुम्हें कुछ चीज़ नहीं समझ आ रही है, ask it. It will make your life so much easier. Don't feel shy. You cannot know everything in the world basically, तो just be okay with asking at least. The third thing that I learned is that you will learn by doing. तुम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि तुमने पहले दिन काम शुरू किया एंड यू आर एब्सोल्युटली ब्रिलियंट विद दैट. नो, इट विल नॉट हैपन. तुम्हें धीरे धीरे चीज़ें आएंगी एंड यू विल गेट कंफर्टेबल विद थिंग्स विद टाइम. एंड सो बेसिकली यही है मेरी लर्निंग्स. Now at the end, was this internship valuable? It was 100% valuable to anyone who is thinking कि should I join a internship. मेरा सजेशन ये होगा yes. अगर वो तुम्हारी लाइफ का कोई बहुत इंपॉर्टेंट गोल हैम्पर नहीं कर रहा है, प्लीज़ जॉइन इट. यू विल लर्न सो मेनी थिंग्स. मैं अपनी बात करूँ तो मैं माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के साथ भी फेमिलियर आफ्टर वर्किंग ही हुई हूँ. लाइक एवरी लिटिल थिंग, मे बी राइटिंग मेल्स, ड्राफ्टिंग मेल्स, हाउ टू कम्युनिकेट टू पीपल. एंड मुझे ये भी पता चला दैट इफ़ यू राइट इन कैपिटल सो इट इज़ basically that you are shouting or something. So this is something I learned and that is basically it. मैंने ट्राई किया कि मैं अपना ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंस बता सकूँ एंड शेयर कर सकूँ अपनी सारी learnings and all of the things. And if you have any other question, you can write me in the comments. I'll try to answer it. Thank you very much guys. Bye bye.